manner, we can change individuals for the better. Inspired by the work of Thorndike and his law and effect, he devised the learning theory, operant conditioning, which can be defined as a learning process in which the consequences, which follow a response, determine the likelihood that the behaviour will be repeated in the future. So behaviour is strengthened when it's been reinforced, therefore more likely to recur, and behaviour is weakened when it's been punished, less likely. बच्चे ध्यान नाल सुनना, ये एक्सपेरिमेंट है दा, ठीक है, एक एक दसेगा भी किथे क्या क्या है, ध्यान नाल सुनो. The Skinner box to identify how the consequences of actions affected future behaviour. So, in terms of some of the key aspects of the Skinner box, contained a lever that was used for both positive and negative reinforcement. The positive reinforcement in the form of food was delivered through a food dispenser after lever pressing. There was an electric grid on the floor that would deliver painful electric current. There was a light that when flashed was a warning signal to the rat that the electric current was about to come. So in order to provide motivation for behaviour, Skinner used hungry rats that were placed in his Skinner box. And much like the cats in Thorndike's puzzle box, initially their behaviour was random until they inadvertently hit the lever, which resulted in the immediate rewarding of a food pellet. Now, it didn't take the rats long to learn that lever pressing resulted in the positive outcome of receiving a food reinforcer. So therefore, the consequence of receiving food, which was the desirable stimulus, ensured that the lever pressing behaviour would be repeated again. This is positive reinforcement. Now, initially Skinner used a continuous reinforcement schedule which results in the fastest rate of acquisition, i.e. every time the rat hit the lever, a food pellet would be delivered. Then, later on, he went to a partial schedule, and I'll go through this in a future YouTube clip. And as stated earlier, the Skinner box was also used for negative reinforcement. So the rat was subjected to an aversive stimulus, an unpleasant electric current, and again, the random act of lever pressing switched off the electric current. So the consequence of escaping the electric current, the aversive stimulus, ensured that the behaviour would be repeated, i.e. lever pressing. Later on, Skinner would switch on the signal light just prior to turning on the electric current. And again, the rat fairly quickly learned the association between the light and the electric current and the lever pressing. So the light would be switched on, the rat would rapidly hit the lever to remove that aversive stimulus. That is, the behaviour of lever pressing had been reinforced to remove the aversive stimulus. Thus, we have negative reinforcement. हाँ बच्चे सुने ध्यान नाल हाँ यही सेम चीज़ां सारी ओही ने ਜਿਹੜੀਆਂ मैं कहियां ने इस ਦੇ ਵਿੱਚ क्या है कि स्किनर ने एक बॉक्स बनाया जो ਤੁਸੀਂ बॉक्स देखिया भी है ਉਹਦੇ ਚ ਲੀਵਰ ਸੀਗਾ ठीक है ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੀਵਰ ਉਹ ਦਬਿਆ ਗਿਆ he installed devices to precisely measure activity inside the box and to avoid human error है ना स्किनर ने क्या किया subsequently improved the box increase the degree of control he has over the experimental setting first he soundproofed it पहले उन्होंने soundproof box बनाया ताकि ਜਿਹੜਾ ਚੂਹਾ है कोई और आवाज ना सुने then he installed the mechanical device to record the rat's response and lastly he automated the food dispenser a hungry rat ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ hungry rat ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ was placed in the box क्योंकि hungry rat होएगा वो ताही मूवमेंट करेगा अदरवाइज तो जाके सो जाएगा पिंजरे के अंदर ठीक है आफ्टर एन इनिशियल पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी द rat began to explore the box
कुछ देर वो पिंजरे च जाएगा, थोड़ा रेस्ट करेगा, देखेगा और फिर वो एक्सप्लोर करना शुरू करता है और इवेंचुअली प्रेस द लीवर और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको जब पहला स्टार्टिंग एक्सीडेंटली प्रेस होएगा और फिर उसमें पता लग जाएगा और पैलेट ऑफ फूड वाज रिलीज टू और फिर उसको खाना मिलता है जो भी लीवर को दबेगा। आफ्टर ईटिंग द रैट अगेन एक्सप्लोर द बॉक्स, जब उसने खाना खा लिया फिर एक्सप्लोर करता है। आफ्टर सम टाइम इट प्रेस द लीवर अगेन और कुछ समय बाद फिर प्रेस करेगा एंड द फूड वाज अगेन रिलीज और खाना उसको दोबारा मिलेगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, ये प्रोसेस बहुत टाइम बाद रिपीट किया गया। नाउ द रैट pressed the lever rapidly and hence the operant behavior was learned। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, उसने प्रेस ਕੀਤਾ लीवर और उसਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਕਿਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾਇਆ उसने डॉग ਦਾ रैट ਦਾ। ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ एक्सपेरिमेंट Yes, मैं sir. एक दो वीडियो यदि और Yes. दिखाऊंगा, देखो वीडियो। देखा एक्सपेरिमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਟ ਹੈ ਉਹ ਲੀਵਰ Yes, ਦਬਦਾ ਹੈ, ऊपर लाइट जलती है और उसको पता है कि हम लोग खाना मिलेगा, लेकिन खाना बाद ਚ मिलता है। रीइंफोर्समेंट बाद ਚ आ रही है, पहला वो रिस्पोंड करता है, पहला वो लीवर ਨੂੰ दबदा है और फिर उसਨੂੰ रीइंफोर्समेंट मिलती है। ਇਹਦੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ है ना। ਪੈਵਲੋਵ ਦੇ ਵਿੱਚ क्या ਸੀ, ਪਹਿला खाना आ गया और उसਨੂੰ देख के या स्मेल करके फिर ਜਿਹੜਾ डॉग है वो सलाइवेट करता है, ठीक है। ऐसे क्या है, पहला रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्ड करता है रिस्पोंडेंट और उसके बाद फिर उसमें स्टिमुलस या जो रीइंफोर्समेंट है उसको मिलती है। बच्चे पता लग गया फर्क? Yes, sir. Yes, sir. एक और वीडियो में दिखाऊंगा। टर्न लिखे है, वो टर्न कर रहा है। Can pigeons read? This one gives every indication, because he's been taught to distinguish between two words and to behave appropriately. He's learned his different response to each sign by being rewarded with food. So the bird isn't acting independently. Its behavior is shaped by controlling its environment. The first task was to isolate an individual piece of behavior and see how that could be changed. Skinner did this by keeping individual pigeons at about 3/4 of their normal weight, so that the birds were always hungry, and food could be used as an automatic reward. The pigeon was studied in a uniform box, one it quickly grew used to. One piece of behavior, pecking a coloured disc, was measured on a graph. Pigeon learned that pecking the disc produced a reward. Then the behaviour of pecking could be studied in relation to how often that reward was offered, or in Skinner's terms, what was the schedule of reinforcement. The main thing is what we call schedules of reinforcement. Reinforcement is what the layman calls reward, and you can schedule it so that a reward occurs every now and then when a pigeon does something. We usually use a response with a pigeon pecking a little disc, a little
spot on the wall, and you can reinforce with food. But you don't reinforce every time. You're perhaps every 10th time, or perhaps only once every minute or something like that. There are a very large number of schedules, and they have their special effects. And there is a good example of how you can move from the pigeon to the human case, because one of the schedules which is very effective with rats or pigeons is what we call the variable ratio schedule, and that is at the heart of all gambling devices, and has the same effect. The pigeon can become a pathological gambler just as a person can. Now, the fact that we found that out with pigeons and could prove it by removing and changing the schedule makes it easy for it to interpret the case with the human subject. We don't say that the human subject gambles to punish himself, as the Freudians might say, or gambles because he feels excited when he does so. Nothing of the sort. People gamble because it leaves it in we have done something in ਪਿਜਨ ਤੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜਦਾ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਝ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਦਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਲਰ ਤੇ ਉਹ ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਓਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਓਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਚੇ हाँ तो दो लॉज की गल अपन ने करनी है लॉज ऑफ कंडीशनिंग की पहला है लॉ ऑफ कंडीशनिंग एंड लॉ ऑफ सर ये कंडीशन स्टूडेंट्स पे किस तरह से अप्लाई होती है ये ऑपरेंट कंडीशन हम स्टूडेंट से किस तरह रिलेट कर सकते हैं जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि अगर बच्चा शरारत कर रहा है ठीक है बच्चे ने शरारत करी रिस्पॉन्ड कर दिया अब हमने उसको रीइंफोर्समेंट देना है आप उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दोगे या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोगे पनिशमेंट या रिवार्ड या पनिशमेंट है ना तो पनिशमेंट दोगे ना आप तो पनिशमेंट देके आप उसके ये जो हमने अभी लॉ करना है लॉ ऑफ एक्सटिंक्शन क्या होता है कि अकरेंस ऑफ एन ऑपरेंट ऑलरेडी स्ट्रेंथन्ड थ्रू कंडीशनिंग इज नॉट फॉलोड बाय रीइंफोर्सिंग अगर हम जो उसका बिहेवियर बन गया है यानी कि शरारत करने का बच्चे का बिहेवियर बन गया अगर उसको हम रीइंफोर्स नॉट फॉलोड बाय रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस अगर हम ना दिया जाए तो स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है अगर हम उसको पनिशमेंट देंगे तब जो उसकी बिहेवियर की जो स्ट्रेंथ है यानी कि शरारत करने की जो आदत है वो फिर छूट जाएगी मुझे समझ आया हाँ बाकी जैसे जैसे हम आगे करेंगे